Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards paragraph number 5. Use of technology is another cause of noise pollution. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems, and TV all become irritants from time to time. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools, and colleges. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. Moreover, listening to loud music on TV on a loud volume is another source of noise pollution. For example, people need to develop some civic responsibilities so that others may not be in trouble because of their careless actions. So dear students, पैराग्राफ की रीडिंग कंप्लीट होती है. अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं. एंड द फर्स्ट वर्ड इज अनमॉनिटर्ड, बगैर जांच पड़ताल के. अनवॉचिंग और अनसेफ. इरिटेंट, जिच करने वाले, इनके तंग करने वाले. वैक्स और एनॉय. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसिवली, बेहद ज्यादती, मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा होना. इमॉडरेट और यू कैन से इनऑर्डिनेट. द नेक्स्ट वर्ड इज सिविक, शहरी, मीन्स सिविलियन, नॉट मिलिट्री. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी और यू कैन से आंसर. द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रबल, परेशानी, अपसेट और यू कैन से एंग्विश. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की पार्ट्स के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं. द फर्स्ट लाइन इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इज अनदर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. शोर की आलूदगी का एक और सबब है, एक और वजह है. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है. फॉर एग्जाम्पल, अनमॉनिटर्ड यूज, मिसाल के तौर पर बिला कायदो ज़वाबित इस्तेमाल, इनके बगैर रोक टोक के इस्तेमाल ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी. मोबाइल फोन, बिजली के जनरेटर, मौसीकी का बेहंगम निज़ाम और टेलीविज़न का. ऑल बिकम इरिटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फवक्तन इश्तियाल अंगेजी का सबब बन जाते हैं, दूसरों को तंग करने का सबब बन जाते हैं, दूसरों के लिए मुश्किल का सबब बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन का बिला कायदो ज़वाबित इस्तेमाल, बिजली के जनरेटर, मौसीकी का बेहंगम निज़ाम और टेलीविज़न का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन इश्तियाल अंगेजी का सबब बन जाते हैं. पीपल यूजली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स. लोग बिलअमूम अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते और पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स, या खामोश तर्ज पर नहीं चलाते. when they enter offices, hospitals, schools and colleges, दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते वक्त. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. लोग बिलअमूम दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते वक्त अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते या खामोश तर्ज पर नहीं चलाते, यानी उन्हें साइलेंट मोड पर नहीं लगाते. दे आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली, वो कसरत से बिजली के जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं. इन रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाकों में. एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज, और दूसरे मकीनों को बेआराम करते हैं. इल एट ईज मीन बेआराम करना, मुश्किल में डालना, तकलीफ पैदा करना.
They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. वो रिहायशी इलाकों में कसरत से बिजली के जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मकीनों को बेआराम करते हैं. The next line is, moreover, listening to loud music on TV on a loud volume, मजीद बरा पुरशोर मौसीकी या टेलीविज़न को ऊंची आवाज़ में सुनना is another source of noise pollution. सूती आलूदगी का एक और सबब है. Moreover, listening to loud music on TV on a loud volume is another source of noise pollution. मजीद बरा पुरशोर मौसीकी या टेलीविज़न को ऊंची आवाज़ में सुनना सूती आलूदगी का एक और सबब है. For this, people need to develop some civic responsibilities. इसके लिए लोगों को अपने अंदर कदरे शहरी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने की ज़रूरत है. So that others may not be in trouble because of their careless actions. ताकि उनके गैर मुख्तात अमाल की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो. Careless actions, गैर मुख्तात अमाल. For this, people need to develop some civic responsibilities so that others may not be in trouble because of their careless actions. इसके लिए लोगों को अपने अंदर कदरे शहरी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने की ज़रूरत है ताकि उनके गैर मुख्तात आमाल की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होती है. अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. तो सिंपल इंग्लिश, वेरी सिंपल, कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems, and TV all become irritant from time to time. So simple English है, for example, unchecked use of cell phones, generators, music instruments, and TV all causes problems time to time. The next line is, people usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, people usually do not turn off their cell phones or keep them on silent mode when they enter in offices, schools and colleges. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, they use generators excessively in residential areas and make the residents feel ill at ease. Next है, moreover, listening to loud music on TV on a loud volume is another source of noise pollution. तो moreover के लिए हमने further का वर्ड यूज किया. Furthermore, watching TV and listening music at maximum volume is also one of the cause of noise pollution. For this, people need to develop some civic responsibilities so that others may not be in trouble because of their careless actions. For this, people have to take civic responsibility so others, due to the carelessness and negligence, may not become the sufferer of noise pollution. Dear students, यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है. अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन का मुताला करें. The box question is, how does technology increase noise pollution? What are the technology-based irritants? टेक्नोलॉजी किस तरह से शोर की आलूदगी में इजाफा करती है? टेक्नोलॉजी पर बुनियाद रखने वाली इश्तियाल अंगेज चीज़ें कौन सी हैं? तो आंसर है, टेक्नोलॉजी मोस्टली प्रोड्यूसेस नॉइज क्रिएटिंग डिवाइसेस, एडिस कार्स, इलेक्ट्रिकल टूल्स, स्पीकर एटसेट्रा. ऑल आर टेक्नोलॉजी बेसिस इरिटेंट्स. टेक्नोलॉजी ज़्यादातर आवाज़ पैदा करने वाली मशीनें बनाती है. मसलन गाड़ियाँ, बरकी आलात और स्पीकर वगैरह सब की बुनियाद टेक्नोलॉजी इश्तियाल अंगेज चीज़ें हैं.
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 5 भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है।